political corridors. Today is a big meeting by the Bharatiya Janata Party. It is, remember, ahead of Lok Sabha elections, the first list that was announced of the BJP. Now the second list is likely to be announced soon, for which today that meeting is going to be organized. What are we expecting today? With BJP in election mode leaving no stone unturned for the battle, the key meeting will be attended by Prime Minister Modi, Home Minister Amit Shah, Party Chief JP Nadda and other core committee members. We are told that also joining in the meeting will be Chief Ministers of the BJP-ruled states, and that will be to approve of the second list of candidates for more than 150 Lok Sabha constituencies. Remember, BJP released a few days ago first list of 195 candidates for the Lok Sabha elections. Now, that had the names of the expected BJP bigwigs, Prime Minister Modi, Home Minister Amit Shah and other names from the party. So, who will now be a part of the 150 seats that the BJP is likely to finalise on? So remember, you're looking at on your screens those who got lucky this time, whose names were mentioned in the first list. Many of them have had political experiences, many of them getting a new opportunity as well, specifically with regard to Delhi and the southern states where the fresh names were also announced. But remember, it was one of the big upsets also that was witnessed by the Bharatiya Janata Party over some of its big faces. Now, Dr. Harshvardhan has been a prominent face from the BJP, has been a member of parliament from Delhi, but his name from Chandni Chowk was not announced, and that of course came as a surprise. But he'd already also made suggestions that he'd like to return to the medical duties specifically. Meenakshi Lekhi, again New Delhi, one of the posh constituencies of the national capital, has had political experience, lawyer by profession as well, did not get an opportunity. Instead, it went to Basuri Swaraj, a new face, but coming in, of course, with political experience of a family of Sushma Swaraj. Pravesh Singh, again coming in from a political family, but from West Delhi, he was the member of parliament. These were faces, remember, after an internal survey were done for Delhi, these names did not make the cut. Ramesh Biduri, known for making some of the controversial comments as well, while had a stronghold of South Delhi region, but BJP for some reason thought he is not going to be mentioned, and only Delhi face was Manoj Tiwari from Northeast Delhi to retain out of 5 names. Pragya Singh Thakur, Sadhi Pragya again not making the cut. Now remember, it had earlier been due to possibly some controversial comments from Bhopal, and did not make the cut this time. Rameshwar Teli also from Dibrugarh, MOS Food Processing, was dropped as a name. So there were some discussions that were definitely done internally that the Bharatiya Janata Party decided to not go ahead with these names. What sort of calculations were done? Why did they think these names may not be repeated while there have been a big face of the BJP? And for that, I want to bring in India Today's Himanshu Mishra. Himanshu, इतने सालों से आप भारतीय जनता पार्टी और सरकार को ट्रैक कर रहे हैं. जब हम बात करते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, मीनाक्षी लेखी, रमेश बिदूरी, जो बड़े नाम रहे हैं, या प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो भोपाल से बड़ी नाम रही हैं, उनको ना अपॉर्चुनिटी देके एक नया नाम लाना, क्या हम मान सकते हैं जो ये 150 सीट्स पे डिस्कशन होगी सेकंड लिस्ट की आज जिसपे मीटिंग है, उसमें भी ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? देखिए, बिल्कुल पूजा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये एक्सपेरिमेंट एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, क्योंकि 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी की जो काम करने की शैली है वो चेंज हो गई है, और फीडबैक के आधार पर और साथ ही साथ सर्वे के आधार पर जो नाम सामने आते हैं, पार्टी उन्हीं पर मोहर लगाती है, और जो कॉन्ट्रोवर्शियल नेम होते हैं उनको पहले ही पार्टी की तरफ से ये संदेश दे दिया जाता है कि आपका नाम कट सकता है। और जिन नामों को लेकर आपने अभी चर्चा की, वो चाहे साध्वी प्रज्ञा हो या डॉक्टर हर्षवर्धन हो, मीनाक्षी लेखी हो, रमेश बिदुड़ी हो या अन्य नाम हो, इनके लेकर जो फीडबैक था वो पार्टी ने माना, और आज जिन 150 से ज्यादा सीटों पर नामों को लेकर चर्चा होगी, उन स्टेट्स के नाम है हरियाणा, गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र और तेलंगाना। तो आप मान सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से इस चीज को लेकर आगे बढ़ रही है कि कहीं भी किसी भी तरीके के जो कंट्रोवर्शियल नेता हैं या जिनका फीडबैक ठीक नहीं है, जिनके लेकर जो पार्टी की तरफ से कार्यकर्ताओं की एक ओपिनियन है वो ठीक नहीं है, सर्वे में जिनकी रिपोर्ट ठीक नहीं है, जिन्होंने पिछले 5 सालों में पार्टी के जो ऑर्गेनाइजेशनल प्रोग्राम्स रहे हैं उनमें पार्टिसिपेशन उस तरीके का नहीं किया है, उन आधारों को मानक बनाते हुए जो है भारतीय जनता पार्टी जो है अपने उम्मीदवारों के नए चयन कर रही है। और देखिए, आप जो विवादास्पद लोग हैं उनसे भी दूरी मेंटेन कर रही है।
तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस चीज को लेकर आगे बढ़ रही है कि देखिए विवाद भी ना हो और फीडबैक ठीक हो। अगर किसी सांसद के खिलाफ एंटी इंपॉर्टेंट इनकम्बेंसी बात है आपने कही तो उसको बदल हिमांशु, भी मैं दिया जाए। चाहूंगी आप और हमारे साथ ही साथ साथ बने मैं रहे। जी, जैसा हिमांशु बता रहे, हिमांशु is telling us about how some of the names felt by the BJP at the top leadership, perhaps of some names who were not strongly associated with either meetings, organizational events, or the sort of image that the party wanted to send across was sent as the organization, and perhaps on the ground the sentiment was not in favor as much by the public when the survey was done. A lot of calculations were put in place, and that's why some names were dropped, some new opportunities have been given. But that's just about Delhi and what was announced in the first list, 195. What about the alliances in the southern states that remain in focus? Himanshu, stay on with me. Remember Andhra Pradesh. Southern states is where Bharatiya Janata Party is desperate to make inroads, specifically, for example, in a state they possibly can. In Andhra Pradesh, Chandrababu Naidu has now come with an alliance of TDP, Janasena and the Bharatiya Janata Party. That means on the other side is Jagan Mohan Reddy of the YSRCP. Now, while both Jagan Mohan Reddy and Chandrababu Naidu have been meeting Prime Minister Modi in the past few months, but now with this alliance, it is clear that the political calculations have been done and the political storm has started. Chief Minister Jagan Mohan Reddy came down heavily on this alliance and targeting Chandrababu Naidu. Jagan Mohan Reddy called him and the parties he joined hands with a zero. Andhra Pradesh Chief Minister also said Naidu reached Delhi looking for support because TDP is in no situation to survive by itself. This comes after BJP, TDP and Janasena announced their alliance, but the parties have not yet confirmed their seat sharing. What are we hearing from our sources on the ground? That the Janasena and the Bharatiya Janata Party will contest on about 6 to 8 Lok Sabha seats out of 25, which means Telugu Desam Party will likely bag maximum in majority chunk, obviously because of also the political experience that TDP has had in Andhra Pradesh. So it's going to be Jagan Juggernaut versus BJP, TDP, Janasena in Andhra Pradesh. हिमांशु मिश्रा continues to be with us. हिमांशु, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, यहाँ पर तो भारतीय जनता पार्टी is getting stronger by the day. But when it comes to the southern states, that's where the BJP is still struggling. क्या हम मान सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में ये जो अलायंस बनाया है बीजेपी ने, ये फोकस रहेगा कि किसी तरह बीजेपी इनरोड्स बना ले आंध्र प्रदेश में? देखिए बिल्कुल बीजेपी को ये इस तरीके की कोशिश भारतीय जनता पार्टी जो है सदर्न स्टेट्स में कर रही है और पहले भी करती रही है। क्योंकि देखिए अगर आप देखेंगे 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजे 14 के, तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो नॉर्थ के स्टेट्स में और जो है वेस्ट स्टेट्स के अंदर जो है वो सेचुरेशन पॉइंट पे है। मैक्सिमम सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ जीती है। राजस्थान में 26 में से 26 जीती है, 25 में से 25, गुजरात में 26 में से 26, हरियाणा में 10 में से 10, दिल्ली में 7 में से 7, उत्तराखंड में 5 में से 5, हिमाचल में 4 में से 4, उत्तर प्रदेश में जो है 62 सीटें 2019 में जीती थी, 71 जो है 14 में जीती थी। तो एक तरीके से बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास जो है इन स्टेट्स में गेन करने का। तो इसीलिए जो है दक्षिण के जो राज्य हैं, चाहे वो तमिलनाडु है, केरल है, तेलंगाना है, आंध्रा है और साथ ही साथ जो है पश्चिम बंगाल और उड़ीसा है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि स्कोप है जहां अपने नंबर्स को बढ़ाया जा सकता है। आंध्र प्रदेश में टीडीपी के साथ अगर भारतीय जनता पार्टी ने पूरा अपना अलायंस किया है तो उसके कारण देखिए आप कि बीजेपी को 2019 में यहाँ पर जो है वो 1% से यानी 1% से कम वोट शेयर मिला था, यानी नोटा भी उससे ज्यादा था। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे टीडीपी के साथ अलायंस भी किया और 6 सीट उन्हें मिल रही है। असेंबली सीट्स में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 8 ही जो है असेंबली सीट्स पे कॉन्टेस्ट करेगी, लेकिन 6 लोकसभा सीट, अगर इन 6 में से भारतीय जनता पार्टी मैक्सिमम जितनी जीतेंगी वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बोनस ही होगा। तो ये माना जा सकता है कि बीजेपी चाहती है कि उनके दोनों हाथ में लड्डू हो, क्योंकि 1% से कम वोट शेयर उनका आंध्र प्रदेश में है और उसमें अगर 6 सीटें यहाँ मिलती हैं और ज्यादा से ज्यादा यहाँ चाहे वो 1, 2, 4 जो भी नंबर 6 में हो वो उनके लिए बोनस के रूप में होगा। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी को इस चीज का इल्म बहुत अच्छी तरीके से है कि आंध्र प्रदेश में टीडीपी के साथ अगर अलायंस किया है तो उसका इफेक्ट जो है वो तेलंगाना में भी पड़ेगा, क्योंकि तेलंगाना में भी जो है टीडीपी के कुछ वोट्स हैं और अच्छे माना जा सकता है कि 3 से 4% जो है टीडीपी का वोट शेयर जो तेलंगाना में है उसका इफेक्ट भी भारतीय जनता पार्टी पे पड़ेगा और उसका फायदा लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को तेलंगाना में भी मिलेगा, ना सिर्फ आंध्रा में।
All right, Himanshu Mishra will be tracking the latest on that. So is it just about Andhra Pradesh, but is it also about other southern states where the BJP will want to make inroads, even though in an alliance? Thank you so much for now, Himanshu Mishra, joining us.